Hello guys, welcome to Fun with Learning. This is 19th video in the series of Mission CHSL 40 days. I hope you have watched previous day's video. If not, you can get the link in the I button. And guys, please do like, share and subscribe our channel. Now let's begin with today's question, and the first question is, which state recently became the 5th Indian state and 125th global state to join the Under 2 coalition? कौन सा राज्य हाल ही में अंडर 2 गठबंधन में शामिल होने वाला पांचवां भारतीय राज्य और 125वां वैश्विक राज्य बन गया है? आंसर इज महाराष्ट्र. Maharashtra became the 5th Indian state and 125th global state to join the Under 2 coalition to fight the climate change. The other 4 states and union territory are Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Telangana and West Bengal. Moving to second question, which of the following articles of the Indian Constitution provides for the appointment of a finance commission? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? आंसर इज आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280. द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द Indian Constitution, mainly to give its recommendation on distribution of tax revenues between the Union and the states and amongst the states themselves. Moving to third question, ultrasonic sounds are the sounds which have frequencies. अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्तियाँ होती है. आंसर इज हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक. Ultrasonic wave is defined as inaudible sound with high frequency for the human, the frequency of which generally higher than 20 kHz. Moving to next question, the book Target 3 Billion is written by. Target 3 Billion पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर इज APJ अब्दुल कलाम. Target 3 Billion is a book by the former President of India APJ Abdul Kalam and Srijan Pal Singh. The book highlights the issue prevailing in rural India and suggests measures to improve standards of living. Moving to next question, which of the following is a landlocked country? निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? आंसर इज मंगोलिया. Mongolia is a landlocked country bordered by Russia and China. The nation is known for vast, rugged expanses and nomadic culture. Its capital is Ulaanbaatar. Moving to next question, the lens type commonly used for correcting presbyopia is. प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार है. आंसर इज बाइफोकल लेंस. The lens type commonly used for correcting presbyopia is bifocal lens. Bifocal eyeglass lenses contain two lenses to help you see objects at all distances after you lose the ability to naturally change the focus of eyes due to age, also known as presbyopia. Moving to next question, National Viral Hepatitis Control Program NBHCP aims to achieve countrywide elimination of hepatitis C by. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में हेपेटाइटिस सी का उन्मूलन करना है. आंसर इज 2030. द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन July 28, 2018. इट एम्स टू कॉम्बेट हेपेटाइटिस एंड अचीव कंट्री वाइड एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी बाय 2030. Moving to next question, the famous कंदारिया टेम्पल इज लोकेटेड एट. प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर स्थित है. आंसर इज खजुराहो. कंदरिया महादेव टेम्पल इज द लार्जेस्ट, टॉलेस्ट एंड द मोस्ट ऑर्नेट टेम्पल ऑफ द सर्वाइविंग टेम्पल्स एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश. द टेम्पल इज अराउंड 31 मीटर टॉल and is one of the western group of temples apart from Mata Geshwara and Vishwanath temple. Moving to next question, what is one of the liquids commonly used in liquid in glass thermometer?
लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक क्या है? आंसर इज अल्कोहल, शराब। Alcohol is one of the liquid commonly used in liquid in glass thermometer. The temperature measurement range of alcohol thermometer varies from 115 degrees Celsius and 785 degrees Celsius, where former is the freezing temperature point of alcohol and later is the boiling temperature point of alcohol. Moving to next question. Thomas Cup is associated to which sports? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? आंसर इज बैडमिंटन। थॉमस कप is associated with the sport badminton. It is a competition among teams representing member nations of the Badminton World Federation. Moving to next question. Which one of the following statements about a state finance commission is true? राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह एक संवैधानिक निकाय है। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। द आर्टिकल 243 फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजंस टू constitute स्टेट फाइनेंस कमीशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. On any issue pertaining to the disqualification of any member of Lok Sabha under 10th schedule of Indian Constitution, the final decision is taken by whom? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, अध्यक्ष लोकसभा. On any issue pertaining to the disqualification of any member of Lok Sabha under 10th schedule of Indian Constitution, the final decision is taken by the Speaker of Lok Sabha. Moving to next question. As per the census 2011, which of the following states / union territories claimed second rank in terms of literacy rate? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरे स्थान का दावा किया है? आंसर इज लक्षद्वीप. द यूनियन टेरिटोरी ऑफ लक्षद्वीप claimed second rank in terms of literacy rate in the census 2011. The top 5 states / union territories with highest literacy rate are Kerala 94%, Lakshadweep 91.85%, Mizoram 91.33%, Goa 88.22% and Tripura 87.22%. Moving to next question. In 19th century, the Satnami movement in central India was founded by 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर इज गुरु घासीदास. द सतनामी मूवमेंट was founded in 1820 in the Chhattisgarh region in the central India by Guru Ghasidas. Guru Ghasidas was Guru of Satnam Panth in the early 19th century. The Satnami sect was similar to Sikhism. Moving to next question. Which of the following cities hosted an international summit which adopted a declaration on digital health? निम्नलिखित में से किस शहर ने एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया? आंसर इज दिल्ली. Fourth Global Digital Health Partnership Summit was held in Delhi in February 2019, which adopted a declaration on digital health. The Delhi Declaration outlines the digital health that is key to attaining sustainable development goals and improving the health and well-being of citizens. Moving to next question. बढ़ती का नाम जिंदगी is the tagline of which of the following banks? बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? आंसर इज एक्सिस बैंक. बढ़ती का नाम जिंदगी इज द टैगलाइन ऑफ द एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक इज द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, headquartered in Mumbai, Maharashtra. The bank was founded in December 1993 as UTI. Moving to next question. In the context of Mughals, which of the following is not correct? मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आंसर इज द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब देम एज द डिसेंडेंट ऑफ ए लेजेंडरी Iranian king
अफरासियब। मुगल दरबार के इतिहास में उन्हें एक महान ईरानी राजा अफरासियाबी के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब them as the descendant of a legendary Iranian king Afrasiab is not correct. Moving to next question. The book titled Every Vote Counts, The Story of India's Election was written by whom? Every Vote Counts, The Story of India's Election नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर इज नवीन चावला। The book titled Every Vote Counts, The Story of India's Election was written by Naveen Chawla. He is retired Indian civil servant who served as 16th Chief Election Commissioner of India. Moving to next question. In the context of agriculture, the term Barani refers to which type of farming? कृषि के संदर्भ में बरनी शब्द किस प्रकार की खेती को दर्शाता है? आंसर इज रेन फेड फार्मिंग, वर्षा पर आधारित खेती। The term Barani is used for the rain-fed agriculture land in India. Barani area are any low rain area where rain-fed farming is practiced. Moving to next question. Narendra Modi Cricket Stadium are situated in which city? Narendra Modi Cricket Stadium किस शहर में स्थित है? Answer is Ahmedabad. Newly built Narendra Modi Cricket Stadium is situated in Ahmedabad, Gujarat. It is the largest cricket stadium in the world and with a seating capacity of 1.32 lakh spectators. Moving to next question. In the context of a Word document, the term guttered stands for which of the following? शब्द दस्तावेज के संदर्भ में गटर शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए है? आंसर इज द स्पेस लेफ्ट ऑन वन साइड फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग, सिलाई और बंधन के लिए एक तरफ छोड़ी गई जगह। In the context of a Word document, the gutter margin is a typographical term used to designate an additional margin added to a page layout to compensate for the part of paper most usable by the binding process. Moving to next question. Which of the following country will host the Cricket World Cup 2023? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? आंसर इज इंडिया, भारत। The ICC Men's Cricket World Cup 2023 will be the 13th edition of the Men's Cricket World Cup hosted by India during October and November 2023. Moving to next question. On which date UNO Day is celebrated? UNO दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर इज 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। October 24 has been celebrated as United Nations Organization Day since 1948. The UN Day marks the anniversary of the entry into force in 1945 of the UN Charter. Moving to next question. In the domain names, the expression EU stands for what? डोमेन नामों में अभिव्यक्ति EU का क्या अर्थ है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। In the domain names, the expression EU stands for Australia. Domain name is a sequence of usually alphanumeric characters that specify a group of online resources and that forms part of the corresponding internet addresses. Moving to next question, and it is the last question of today. Which is the only active volcano in South Asia? दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर इज बैरन आइलैंड। Barren Island is located in the Andaman Sea. It is the only confirmed active volcano in South Asia and the only active volcano along a chain of volcanoes from Sumatra to Myanmar. Thanks for watching this video. Please इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।